हाय जी, हेलो जी, नमस्ते जी, सत श्री अकाल, आदाब। मैं शुभम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लॉस्ट इन कनाडा। क्या चल रहा है कनाडा में, है ना? देखो अभी क्या हो रहा है कि भाई ट्रूडो ने कार्बन टैक्स पे एग्जेम्पशन कर दिया है जो ऑयल बेस्ड हाउस होल्ड्स हैं, जो पुराना सिस्टम यूज़ करते हैं बेसिकली। और वो सारे लोग अटलांटिक रीजन में हैं, नोवा स्कोशिया, न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, न्यू ब्रंसविक, मतलब हैं ज़्यादा नोवा स्कोशिया और न्यू फाउंडलैंड में, बट हाँ, अटलांटिक रीजन में ज़्यादा ऑयल बेस्ड है। तो टेक्निकली स्पीकिंग वो ये कह रहा है कि भाई बाकी को मैं टेंशन में नहीं लेता, मतलब आई डोंट केयर, बाकी ऑयल सिस्टम्स जो भी डिफरेंट तरह के और नेचुरल गैस या ये वही सिस्टम यूज़ करते हैं उन पे मैं टैक्स एग्जेम्पशन नहीं कर रहा। मैं सिर्फ और सिर्फ ऑयल बेस्ड वालों पे कर रहा हूँ, ताकि वो एक तो थोड़ा उनको पैसों का पड़ेगा, राहत मिलेगी, और इवेंचुअली दे हैव टाइम टू स्विच ओवर टू हीट पम्प्स। हीट पम्प्स मेरे भी उस पर लगा हुआ है लिविंग रूम में। हीट पम्प्स आर गुड, एफिशिएंट होते हैं, रिलायबल होते हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ कि भी नॉट एवरी वन कैन अफोर्ड इट। तो गवर्नमेंट लो इनकम हाउस होल्ड्स को वो करती है, स्पॉन्सर करती है, राइट, पैसे उस पर देती है उन्हें थोड़ा सा। तो स्पेशली कैनेडियंस को जो ऑयल बेस्ड पे नहीं है, जो ऑलमोस्ट सारे ही हैं कैनेडियंस, दे आर सेइंग कि भाई हमें भी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट फ्यूल्स यूज़ करते हैं उन पे हमें भी दो भाई राहत, जो अभी तक नहीं दी। तो पॉलीवेयर और ट्रूडो जी लड़ रहे हैं, देखते हैं क्या लड़ाई का नतीजा निकलता है। आओ जी देखते हैं। Prime Minister's panic flip-flop on the carbon tax for oil heating proved everything he said for 8 years about the tax is wrong. It's not worth the cost. He said that the tax would make people better off. He's now admitted that that's not true. He said it's about the environment, but he leaves the tax on lower emitting and more environmentally friendly natural gas. And now he's dividing Canadians based on where they live. So will he stop creating two classes of Canadians? Will he take the tax off all so Canadians can keep the heat on? The goal from the very beginning of our fight against climate change and the price on pollution was to put more money in people's pockets and encourage protecting the planet. And that's exactly what we've seen over the past number of years. As a step, one of the things we are targeting right now is home heating oil, which is used right across the country, primarily by lower income residences, and they pay more for home heating oil than you do for natural gas, and it's dirtier and more emitting than natural gas. Great. So we are going to provide free heat pumps for low-income families in provinces that are willing to participate with us and drive down emissions. He admits that he's keeping the tax on cleaner and lower emitting natural gas. This is clearly not about environmental science, it's about political science. And that political science with him is always divide and conquer. Tear the country apart to serve his own narrow personal interest. Does he not realize that what he is doing is not just bankrupting Canadian households, 14% of whom are living with unsafe temperatures because of higher energy costs, but he's actually tearing our national unity apart? Mr. Speaker, what we see from the Conservatives yet again is misinformation. The price on pollution applied to natural gas does put more money back in the pockets of 8 out of 10 Canadians across the country. That is what the Leader of the Opposition refuses to recognize. When Canadians receive a climate action incentive check, that more than compensates for 8 out of 10 households across the country than what they spend on carbon price with natural gas. It doesn't apply that way. That math doesn't apply on home heating, which is why we're phasing out home heating oil by replacing them with free heat pumps for low-income Canadians. And he continues to contradict the parliamentary budget officer who said that 60% of Canadians pay more in his carbon tax than they get back in the rebates. What now he's doing is contradicting what he said on Thursday, wherein he admitted that Canadians are made worse off on a net basis by his tax. That's why he's having to put a pause until after the election. Already, 14% of Canadians are living with
safe temperatures in their homes. 1 in 10 have missed a heating bill in the last 12 months. Will he, before people go cold and hungry, axe the tax so that people can keep the heat on? Home heating oil is more expensive, more emitting, more polluting, and is in households that on general are lower income and don't have the means to support it. That's why we're putting forward a program that is going to give free heat pumps installed right across the country as long as the provinces step up and partner with us the way 3 provinces already have. We know the best way to support families is to have them save thousands of dollars a year on heating. That's what they're going to be able to do with a heat pump. That's why we're delivering it right across the country as provinces step up. So he admits that natural gas is cleaner and lower emitting, and that's exactly why he's going to penalize Canadians for using it. Mr. Speaker, he says he wants to bring in a pause for some people in some places. ये थोड़ा सा रीज़न डाइजेस्ट करना औखा है कि भाई अगर तुम इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ यूज़ कर रहे हो तो तुम्हें ज़्यादा कार्बन टैक्स पे करना पड़ रहा है वर्सेस जो ऑयल बेस्ड है उसको कार्बन टैक्स पे पॉज कर दिया. हाँ, ये कोई सेंस नहीं बनी यार. ये तो तू डिवाइड ही कर रहा है. लोग कहेंगे कि भाई हम क्यों एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहें फिर. बाय गॉड, हाँ यार, लॉजिक तो बनता है. क्या ट्रूडो क्या 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 फूकता है भाई. I want to get rid of the tax for all people in all places and forever. But wait, why don't we let Canadians decide? Why doesn't the Prime Minister pause the tax across the country until Canadians go to the polls so we can have a carbon tax election and Canadians can choose his plan to quadruple the tax or my plan to axe the tax? It is amazing to me that after 3 failed elections in a row by the Conservatives, they still want to fight another election on denying climate change, on denying the costs of climate change. After the summer we've had, they continue to say no plan against climate change is what's good for Canadians, good for our economy, good for businesses. They are wrong, and Canadians are going to show them that once again. स्टाइल तो यार देखो, इसमें तो अगर देखो इलेक्शन करा लो आप, कार्बन टैक्स पे क्या है. ऑब्वियसली इस टाइम पे तो सब ने पॉलीवेयर के साथ ही जाना है. बट ट्रूडो इज़ ऑल्सो नॉट रॉन्ग. कॉन्जर्वेटिव्स ने इन द पास्ट नहीं माना कि भाई क्लाइमेट चेंज इन सब के कॉस्ट्स होती हैं, रियल कॉस्ट होती है लाइक रियल वर्ल्ड में. तो ये तो है. बट यार देखो, इवेंचुअली ऑफ कोर्स अभी करंट सिचुएशन तो ये है कि भाई वो सब यही कह रहे हैं कि भाई हमें पैसा चाहिए. हर बंदा यही कह रहा है कि भाई मैं खर्च ज़्यादा कर रहा हूँ, मेरे पास बचता कुछ नहीं है, सेविंग्स ना के बराबर हो रही है. इट्स बेटर टू हैव मनी इन द पॉकेट रादर देन नॉट हैव मनी एट ऑल, राइट. यही सिचुएशन है. तो होपफुली आई वुड से ट्रूडो ये डिसीजन अपनी रिवर्स करके सारे ही ऑयल बेस्ड जो भी हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, नेचुरल गैस, ये वो जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल है, सब पे डाल दे कि भी पॉज कर दो, कोई टैक्स नहीं है देना. बट इसने करना तो है नहीं. बट चलो, इस टाइम पे सिचुएशन बहुत गंदी है यार. इन्फ्लेशन बहुत चल रही है, तो ऑफ कोर्स पीपल नीड मनी. बट देखो क्या करता है ट्रूडो भाई. रायते फैलाएगा एक और. लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं जल्दी.